गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग सेटअप के बारे में। मैंने यूज़ किया है Insta360 ONE RS और GoPro। दो वर्जन यूज़ किए हैं, एक है 11 और एक था 10। बेसिकली ये वीडियो का मेन एजेंडा है नॉइस कैंसलेशन और ये दो कैमरा कैसे बिहेव करते हैं, और उसमें मैंने Insta360 पे कितना एक्सपेरिमेंट किया है नॉइस कैंसलेशन के लिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बट माइट बी आई एम रॉन्ग इन सम केसेस। वीडियो का पर्पस यही है कि राइडर्स को मोटो व्लॉगिंग में जो नॉइस कैंसलेशन का प्रॉब्लम आता है या विंड नॉइस का कैंसलेशन का प्रॉब्लम आता है उसके बारे में। और फाइनली ये आपका डिसीजन है, आप कौन सा कैमरा लेते हो, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। तो मैंने यूज़ किया था GoPro विद मीडिया मोड, और ये जो है Insta360 ONE RS विद नॉइस कैंसलेशन स्पॉन्ज, और जो विंड बफेटिंग या विंड नॉइस को कम करता है। तो देखते हैं, और ये रिव्यू ऑन द राइड है, तो आपको रियल टाइम टेस्ट का रिज़ल्ट भी समझ में आएगा। चलो देखते हैं। तो ये है मेरा LS2 का हेलमेट स्ट्रीम 2, और इसका माइक सेटअप है, मैंने माउनो माइक यूज़ किया है। और ये जो अडेप्टर है ये जाता है कैमरा में, GoPro हो या Insta360 ONE RS हो, सेम सेटअप है। और दिस इज़ माय हेलमेट। So guys, I am testing the new mic setup on the Insta360 ONE RS on my helmet। अभी ये चेक करना है कि विंड नॉइज़ जो है, अभी मैं जा रहा हूँ 50 किलोमीटर की स्पीड पे, और देखना है कि विंड का जो नॉइज़ है वो कैप्चर हो रहा है, जो डिस्टर्बेंस आता है वीडियोस में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने डेड कैट लगाया है, उसके स्पॉन्ज लगाया, उसके ऊपर डेड कैट भी लगाया है। अभी तो वाइज़र ओपन है, थोड़ी देर में मैं वाइज़र क्लोज करके चेक करूँगा। थोड़ी गर्मी है इसलिए वाइज़र ओपन किया मैंने। तो अभी चेक करते हैं थोड़ी देर में। व्हेन आई रीच द हाईवे, विंड नॉइज़ आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, इज देयर एनी, और इज इट टोटली साइलेंट। वैसे मुझे टोटली साइलेंट भी नहीं चाहिए, इट शुड एक्चुअली हैव द a very light noise of the motorcycle, आजू बाजू environment का noise, but at a very lower volume for a track, and when I speak it should be louder, and I think I have to also increase my volume when I speak, so that I'll do, but मेन इज़ विंड नॉइस। और जब मैं हेलमेट का वाइज़र बंद करूँगा तभी भी चेक करना है कि विंड नॉइस ज़्यादा होता है या कम होता है। अभी विंड नॉइस इज़ ओपन, सॉरी, विंड वाइज़र इज़ ओपन, सो द विंड नॉइस शुड बी मोर एज पर माई नॉलेज। बट अभी ये हाईवे नहीं है, सिटी का रोड है, तो उतना विंड नहीं है यहाँ पे, थोड़ा बहुत है। बट व्हेन आई गो एट अराउंड 100-110, I want to check if the wind noise is there or no. It will come from wrong side.
स्टेबलाइजर बंद कर दिया है, थोड़ा सा विंड है तो ये चेक करना पड़ेगा कि इफ देयर इज विंड फिटिंग विंड नॉइज हो रहा है क्या नहीं। जस्ट ट्राई टू इंक्रीज द स्पीड, wind is there but hopefully it is not recording the wind. There is wind below my chin as well where the mic is. So mic का placement भी एक डिसीजन होगा इसके बाद कि कहाँ लगाना है। ऑन 85 80 so much of traffic here. Now there is a lot of wind, so let's see if the wind noise is getting captured along with my voice, because in my previous videos rather, not vlogs, travel videos, that's what I want to call it. There was a lot of wind noise and my friends were saying wind का कुछ करो, अभी मैंने कुछ किया है, देखते हैं विंड का नॉइज कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मेरी इस रोड पे सब लोग एक दूसरे को देखते हैं और रेस करते हैं। Just look at somebody you're on a good motorcycle, they think of racing, they'll start racing. हेलमेट हाथ में पकड़ के क्यों बैठा है भाई, हेलमेट को पहनो। Is the wind noise getting captured is the question, and that's what I'm trying out. यहाँ पे हवा है इसलिए मैंने ऑन किया। अभी थोड़ी देर में हम जज के घर पहुंचेंगे। This is PCMC. People just drive. Roads are very good, but rules follow नहीं होते यहाँ पे। That is the problem. Wind blast. Am I audible? Is the wind audible? Do I need to do something about it? Please comment below. And before you comment anyway, I'll find it out. There is a lot of wind here. I am at 90 kmph. I can go more. Let's see at 100. And that is 100. So this test also I can check. The signal is green. So this is the Insta 361 RS with the
wind buffeting sponge, and I'll test this on the helmet on my way back. This I've already recorded, so we'll see the difference between this and this with regards to the wind noise. So guys, मैंने अभी लोड किया है Insta360 ONE RS with the noise cancellation sponge on it. तो देखते हैं विंड में कैसा परफॉर्म करेगा. So we are at Mahabaleshwar Mapro, and on the way back we'll be testing this update. See you. राईट साईडला तुम्हाला प्रॉपर नदीचा व्ह्यू आहे. So nice lake, laguna. Trying the Insta360 ONE RS on the highway. Let's see if wind noise is still there. Driving at around 110. So guys, ये टेस्ट जो है वो कैसा था ये आप कमेंट में बताओ. विंड ब्लास्ट है या नहीं है. नॉट अ कैमरा एक्सपर्ट, बट आपका बाइंग डिसीजन के लिए हेल्प हो जाएगा. And now this is Insta360 under the tunnel, 360 ONE RS 4K lens. यहाँ पे जो विंड नॉइज और जो हमिंग नॉइज है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका जजमेंट बन जाएगा. पिक्चर क्वालिटी तो 1080p 60 frames per second का सेटअप है. So at the end of the tunnel, again check the light, the picture quality with the sunlight. That's it for now. We'll meet next time. Bye bye. So guys, अभी मैंने Insta360 ONE RS पे एक सेटिंग किया है with the external mic, and I'm going to test this. So basically एक सेटिंग है जो मैं लाइट बंद कर देता हूँ. तो सेटिंग्स में एक्सटर्नल माइक ऐड करने के बाद में ये आता है एक्सटर्नल माइक, एंड आई हैव मेड दिस -18 decibels. तो विद दिस सेटिंग वी विल ट्राई द विंड ब्लास्ट एंड चेक कि हेलमेट में विंड ब्लास्ट कितना आता है रिकॉर्डिंग में.
हेलो गाइस, तो अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ एक्सटर्नल माइक अगेन ऑन द Insta360 One RS विद एन एक्सटर्नल माइक सेटिंग। वो जो मुझे पता नहीं था, पर मैंने उसको अभी सेट किया है आफ्टर रिसर्च -18 डेसिबल्स को सेट करके। अब इसमें विंड नॉइज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हम चेक करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी विंड है वैसे, तो विंड नॉइज़ नहीं आना चाहिए, मेरी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए। और मैं हाई पिच पे बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं बहुत लो पिच पे बोल रहा हूँ। देखते हैं, चलो अभी मैं इंटरकॉम भी ऑन करता हूँ, मंदार के साथ बात करेंगे तो वो कैसे कनेक्ट होता है देखते हैं। ओके, त्याचा अजून फर्मवेअर अपडेट होते हैं अंकित। ये लो भाई, शुरू हो गया, तुम्हारा वॉइस भी रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन अभी इसका माइक टेस्टिंग चालू है। हम लोग अभी जा रहे हैं डैम की ऊपर। अब हम आए हैं लेक के पास। ये है लेक, बहुत ही अच्छा व्यू है। नीरज 15 मिनट पहले आलो होतो तरी झालं। काय वाव, what a view, what a view। चलो भैया आखिरी तक लेके जाएंगे गाड़ी। ज़्यादा इधर क्या बात है भैया, सड़क वाव। ये तो आगे बोटिंग करिए, बोटिंग तक ही जाना है भैया। गाड़ी धोने जाएगा, गाड़ी धोने का नहीं है रे। जबरदस्त भैया। गाड़ी कहाँ पे को पूरा एंड तक। एंड हे कधी सोडत नाही आम्ही। What a place. सनसेट हो गया है। आना आज तो बियर पक्की चाय पीने। Right grid off. तो गाइज, दिस इज द स्पॉट एंड इफ यू सी, सनसेट अभी जस्ट हो गया है। यू आर चेसिंग द सनसेट। बहुत ही अच्छा स्पॉट है, वर्थ इट। So guys, good morning and happy Republic Day। आज संडे है और रिपब्लिक डे भी है, और हमने एक शॉर्ट राइड प्लान किया है। मैं और वैजत जा रहे हैं पंचगनी। और आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ वैजत का गोप्रो विथ मीडिया मोड फॉर द विंड ब्लास्ट एंड विंड नॉइज़ बेसिकली। सो गाइस, यहाँ पे थोड़ा विंड ब्लास्ट है। जस्ट स्टार्टेड, इट इज 60 किलोमीटर्स पर आवर।
I'll have to check if has the wind blast. So guys, अभी अगर आपको विंड ब्लास्ट अभी भी आ रहा है तो आई एम, और नहीं आ रहा है कमेंट्स करना. This is GoPro मीडिया मोड. हाँ हॅलो. बोला बोला तुम्ही. नाही नाही, तू काय बोलत होता? रेंज मध्ये एवढी कमी झाले. हां, मला कळत नाही ते कशाला डिस्कनेक्ट होत राहते. आमचं डिस्कनेक्ट होत आहे. अदर थिंग तुला ना रिसेट करायला लागेल एकदा. कुठे बसलं की रिसेट करून टाक. चालेल. Delivery. तिकडे लवकर येतं ना या हो. अरे पुण्यातच हे होते, पुण्याला व्हायला पाहिजे ना आधी. So testing the sound, wind blast at 98, 99. Let's see if the GoPro is capturing on the media mount the wind noise or my voice. Capturing the sound again at around 80-90. There is wind and traffic noise. अभी विंड नॉइज़ आ रहा है क्या, ये चेक करना पड़ेगा. ये वाला पैच जहाँ पे विंड नॉइज़ बहुत है, विंड ब्लास्ट है और ट्रैफिक भी है. So let's see. तो यहाँ पे टेस्ट करते हैं. यहाँ पे wind blast है 105 पे हूँ मैं. Let's test the wind blast and on the GoPro. Hopefully जब मैं बोलता हूँ तब वो विंड नॉइज़ नहीं आना चाहिए, या वैसे भी कम आना चाहिए. I've closed my vents and my visor of the helmet. Let's see. So guys, I tested the wind blast in the morning. अभी मैं फिर से टेस्ट कर रहा हूँ. GoPro में एक ऑप्शन है विंड नॉइज़ का, तो उसको मैंने पहले ऑटो पे रखा था, अभी ऑफ़ किया है. इसका कारण ये है कि जब हाई स्पीड पे जाते हैं तो उसमें एक क्रैकल साउंड आता है. तो वो टेस्ट करना है मुझे कि अगर मैं वो ऑफ़ करता हूँ तो क्रैकल साउंड ऑफ हो जाता है या नहीं. इसमें मीडिया मोड लगाने के बाद एक्चुअली जो विंड नॉइज़ है वो वैसे भी कम हो जाता है.
और अगर वो विंड नॉइज़ ऑटो पे रखें तो GoPro tries to reduce that wind noise, and in return it creates a crackle sound, कर कर करके आता है साउंड। तो मुझे अराउंड स्पीड ऑफ 100-110 वो चेक करना है। सो लेट्स सी अगेन विद दैट सेटिंग। हाईवे पे मिलते हैं। सो गाइस, हम अभी हाईवे पे आ गए हैं और आप देख सकते हैं इतना ट्रैफिक है यहाँ पे। दिस इज़ अ बॉटल नेक एक्चुअली। विल क्रॉस दिस बॉटल नेक एंड देन ट्राई 100। Just open the visor so that slow speed पे I can breathe, नहीं तो fog होता है। Okay, traffic, people returning to Pune. Give me some space. Some shooting equipment. Shut the visor now and let's see, I should get some space, and there is a bit of wind, and let's see if it is going to crackle the sound or no. But I have to go at a speed of around 100 probably. There's a lot of traffic here. Not sure if I can do that. This is basically the traffic returning from outside Pune to Pune and proceeding towards PCMC or going to Mumbai. आज संडे है तो ट्रैफिक रहेगा थोड़ा। Okay, let's start. There is a lot of wind blast. Bad roads, traffic. Crackle, is it there? No, yes. I'm on 105, 6, 7, 8. Okay, that's 10.
चेक कि अभी क्रैकल नॉइज आया है कि नहीं। So wind noise I think will be there for some time, but not much, and we have to check the wind noise also, plus if it is crackling. Hopefully it gives me what quality I need. I'm expecting from a GoPro. And if is it worth investing in a media mod after you buy a GoPro. The main challenge was at around 100 or 90, right? So testing that out. Insta360 One RS, I have just checked the footages after the cover, you know, the sponge cover. Still it has that wind noise. There's no noise cancellation happening, so I'm probably not going to use it at high speeds or kind of a. Let me talk to Vijat. हाँ Vijat. हाँ एक क्या की बात? हाँ हॅलो हाँ. सर कुठे बोलला? मी चांदणी चौक. बरं ठीक आहे या. ओके. पोचला का तुम्ही? हो पोहोचला मी टेबल पकडून ठेवलाय. ओके आलो. या तुम्ही. Okay, so that was Vijat. The table is booked. So one more test of 100. Or it's a bad place to test it. This is 88 and hopefully the wind noise is not there. And also one more setting I did was that if you have a media mod, you can swap the mic on the media mod. So what I've done is I swiped it to my side. That is one more thing. It also captures the other side, but there are two mics I guess on that media mod on the top right. So that I have to check if that is reducing the wind noise with this setting, and I can explain those settings, or I'll put a picture of the settings what I did on the GoPro. And this is GoPro 11. If all goes well, then I'll put these on the 13 as well. So I'm just sharing my experiences. I'm not a camera expert as I said, but which will help people to decide for which camera they should go, what should be the audio settings, and how can they get rid of this wind noise
and improve the quality of the video. A lot of traffic today. Five minutes to go till that time. I'll just keep it open, keep recording. I got this stopping. Now I can raise. Sorry, raise my throttle and press for 100, 105, 109. Are you getting the crackle sound or my voice? So when I start without my voice at this speed. तो गाइज होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा आपके मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप में. लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये वाज इट हेल्पफुल और नॉट हेल्पफुल. थैंक यू.